शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज गुरु महाराज जी ने अपनी मेहर से हम सबके बीच में आरती कपूर आंटी जी को भेजा है। तो आई वेलकम आंटी जी, आप आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। वेलकम आंटी जी। जय गुरु जी। जय ओवर टू गुरु यू। जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। आवाज आ रही है साकी? जी। आंटी जी आ रही है। जय गुरु जी। Okay, give me just a second. I am gonna situate myself here. I don't know, जो दरबार की लाइट्स हैं वो ज्यादा ब्राइट नहीं लग रही मेरे को. So I don't know वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आंटी इट्स परफेक्ट। Okay, now it's I think a little bit better. All right, so apologies for the little delay here. And once again, immense gratitude to Guruji and the Sangat for giving me this opportunity. It is the holiday season around the world, and the holidays represent love, joy, hope, and to me, that is the very definition of Guruji. Love, joy, hope, and a phenomenon that gives us immense strength through the most trying, through the most pressing times of our lives. And I always say this with immense humility that just because we're with Guruji, Sangatji, इसका ये नहीं मतलब कि लाइफ में challenges नहीं आएंगे, लाइफ में ups and downs नहीं आएंगे. वो बेशक आएंगे, आते रहेंगे, और शायद maybe the more your guru loves you, the more he puts you through trials and tests, because ultimately he wants to put you on that spiritual, journey which leads to our evolution, right? And Guruji would never see us as human beings. Guruji never saw us as Aarti or Sakhi or Prachi or Shilpi or anybody. To Guruji, we are souls. ये रूह की जो जर्नी है वो है, और उसी कर्म योग से आई थिंक हम गुरुजी के द्वारे आए. टाइम, जरिया गुरुजी ने डिसाइड किया, दैट्स नॉट अप टू अस. तो कई गुड फॉर्च्यून वाले लोग 80s में जुड़ गए, और आज तक भी संगत दिन दुगनी रात चौगनी गुरुजी के प्रताप से जुड़ रही है. सो ये गुरुजी के रंग हैं, ये बड़े निराले हैं संगत जी. और मैं अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस आज शुरू से शुरू करना चाहूंगी गुरुजी की आज्ञा से. So, like I was saying, that the timing is decided by Guruji, right? So we had been hearing about Guruji since early 90s, और सुनना एक और चीज होती है, लेकिन बुलावा is a completely different thing, right? So सुना अनसुना कर दिया कि पंजाब में है, जलंधर में है गुरुजी, बड़े करामाती गुरुजी हैं, और वो पान का पत्ता लगा के या सिर्फ खाली चम्मच से ऑपरेशन कर देते हैं. और सुन के ये बड़ा अजीब लगा कि हाउस दिस पॉसिबल, और जाने वाले भी इतने सारे फौजी लोग. सो एनीवे, लाइक आई सेड, बुलावा नहीं आया था, एंड माय पेरेंट्स डिड नॉट गो. सो सुना अनसुना हो गया, कई साल बीच में निकल गए. उसके बाद गुरुजी आ गए दिल्ली, और मेरे फादर रिटायर हो गए इंडियन आर्मी से. रिटायर होने के बाद वो एक दिन कैंटीन में गए थे, तो वहां शाम को उनकी मुलाकात होती है जनरल मोहन सिंह से.
सो जनरल मोहन सिंह को गुरुजी मामा जी, उनकी वाइफ को मामी जी के नाम से बुलाया करते थे. So he runs into him and ऐसे ही they exchange pleasantries. So जनरल मोहन सिंह ने भी कहा कि सर आज शाम को मैं गुरुजी के आ रहा हूँ तो आप भी चलो. So that's when my dad instantly agreed कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ. एंड दे टाइड अप द टाइम कि ऐसे ऐसे ये एड्रेस है, इतने बजे हम एम्पायर स्टेट के बाहर मिलेंगे. सो ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई, वेयर द फर्स्ट डे माय मदर एंड माय फादर वेंट टू मीट गुरुजी. सो मामा जी मामी जी ने इंट्रोड्यूस कराया और गुरुजी बड़े प्यार से उनको मिले. और गुरुजी ने उनसे ये भी पूछा, ही लुक्ड एट माय फादर, कि जनरल साहब आपको मेरे बारे में पता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਸੀ? This is what he said. And my dad said, हाँ जी गुरुजी पता सी. So then he said, तो फिर तुसी आए नहीं. अगर गलती से भी पहले आ जाते तो बड़ा फायदा उठा जाते जनरल साहब. Something like that. He said in a very witty, lighter vein. And my dad had a very good sense of humor, and he said, "कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गए हैं, अब पूरा पूरा फायदा उठा लेंगे." And that was their first exchange. And true to those words, मेरे को नहीं पता फायदा उठाने का क्या मतलब है या नहीं है. मुझे इतना पता है कि सबसे बड़ा फायदा हम सबको ये है, इस चीज का एहसास संगत जी कि हमारे साथ गुरुजी हैं. And when we hold on to that belief, when we have that inner knowing, trust me, it is the source of immense strength within you. And we don't have to run helter skelter looking for that. When we are able to tap into that inner knowing, that's when we start to just get to realize the faida or the blessings or whatever you want to call it. So you know that exchange happened, and then bade pyar se he ushered my parents to sit सामने. संगत उस टाइम मैं बता रही हूँ आपको लेट 90s की बात, तो संगत कोई इतनी ज्यादा होती नहीं थी. सो गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया. और जो मेरी मॉम को वो मिला तो इट वाज मीठा प्रसाद. एंड everybody has shared this before also कि गुरुजी जो एक हाथ से देते थे वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था. And when she got that prasad, she was very hesitant to eat. कि मैं तो डायबिटीज वाली हूँ और मेरे को तो थोड़ा मीठा भी मना है, और इतना सारा गुरुजी ने प्रसाद दे दिया है तो मैं इसका क्या करूं. बट बिकॉज एवरीबडी वाज ईटिंग, उस टाइम सिस्टम ये था, प्रसाद लेकर बाहर जाओ, खाकर हाथ स्वच्छ करके अंदर आके बैठो. एंड वो होता ना that peer pressure, you see everybody eating, then you start eating as well. And back in the day, Sangaji, there was no WhatsApp, there was no Facebook group, there were no circulars about do's and don'ts. So जो भी हम देखते थे, I mean जो भी हम सीखते थे वो एक दूसरे को देखकर सीखते थे. So everybody was eating. She also started eating. Anyway, प्रसाद खत्म करके अंदर जाके बैठे तो गुरुजी ने राउंड 2 के लिए बुला लिया और उनको दोबारा प्रसाद मिल गया. Now this time her heart started to sink that अब तो मैं पक्का गई, ये this is too much. मेरी तो my sugar is going to instantly spike, and rightfully so, because her logic was telling her that, and that has happened just a million times, that as a sugar patient तुम एक बर्फी या एक लड्डू खा लो तो your sugar will spike, and this was like way more than just एक बर्फी एक लड्डू. So मन में उनका ख्याल आया कि दिस इज इट, आई कैन नॉट ईट एनी मोर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ नैपकिन एंड पुट इन अ नैपकिन एंड अपने पर्स में डाल के मैं ले जाऊंगी. तो वहां पर भी शी वाज चेक्ड कि नहीं आंटी, ये आपका प्रसाद है, ये आपकी ब्लेसिंग है. तो बड़ा अजीब लगा सुन के कि ये कैसी ब्लेसिंग है, तुम शुगर पेशेंट को मीठा खिलाना मतलब जहर देने के बराबर है. बट अब तुम क्या बोलो. सो वो भी खा लिया. So anyway, this is their first evening का experience मैं आपके साथ share कर रही हूँ संगत जी. When my sister and I, we weren't there, हम गए नहीं थे उस टाइम पे. So काफी देर गुरुजी ने उनको बिठाया. रात के आई थिंक 2 या 3 बजे उनको छुट्टी मिली, और छुट्टी लेते टाइम गुरुजी ने उनको टॉफीज दी. एंड
he said ये टॉफीज ले जाओ अपनी बेटियों को दे देना और कल उनको लेकर आना. So when they came home, they told us, we were still awake. They told us all about Guruji, and मम्मा ने ऐसे करके अपना पर्स खाली किया, उसमें से टॉफीज बिस्तरे पे सारी गिर गई. शी सेड ये गुरुजी ने तुम लोगों के लिए भेजी है और गुरुजी ने तुम लोगों को बुलाया है. So we said ठीक है, हम भी चलेंगे. And after that they quickly started exchanging conversation about the sugar levels. एंड वो आपस में पंजाबी में बात कर रहे हैं कि अच्छा अब चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, ये तो बहुत हाई हो गई होगी. सो यू कैन नॉट गो टू बेड विद इतनी हाई शुगर बिकॉज रात को इटसेल्फ यू कैन गो इनटू कोमा इफ यू डोंट मॉनिटर इट. सो मामा ने अपनी शुगर की मशीन निकाली एंड शी प्रिक्ड हरसेल्फ, और शुगर की रीडिंग नॉर्मल, मतलब दवाई खा के भी इतनी नॉर्मल नहीं आती जितना वो प्रसाद खा कर आई थी. So both of them are looking at each other in amazement, because again, I'll say this, it's one thing to hear something, it's another to really experience it yourself. And that's what happened, that now they experienced what they had been hearing. And there was immense जिसे कहते हैं ना डिसबिलीफ, कि ये कैसे हो गया, अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना मीठा खा के आ रहे हो तो आपकी शुगर तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया का कोई लॉजिक वो इंडिकेट नहीं करता. एंड हम लोग वी लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी लॉजिकल human beings, and our mind works on a certain assumptions of ifs and buts and ands, right? Now it wasn't computing in the brain. So anyway, natija ye nikala कि मशीन खराब है और कल सुबह हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेक कराएंगे. सो एनीवे ये हुआ करके वो सो गए. एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दे फाइंड देमसेल्व्स इन रिसर्च एंड रेफरल के डॉक्टर से जाकर प्रॉपर्ली एग्जामिन कराते हैं. वहां पर भी डॉक्टर ने चेक किया और शुगर की रीडिंग वही नॉर्मल. एंड दैट्स व्हेन it started to sink in just a little bit that there is something different about this place. And that was, I think, the first moment of realization where जो हम सुनते हैं, right, कि गुरुजी को किंतु परंतु if but ये सब आप वहां छोड़ के आओ जहां आप अपनी जुतियां खोल कर आते हो. Because गुरुजी को लॉजिक को फेल करने में, लॉजिक को हराने में, लॉजिक को मात देने में बड़ा मजा आता था, साइंस को फेल करने में बड़ा मजा आता था. और वो भी इसलिए बिकॉज ये कलयुग है संगत जी. एंड हियर गुरुजी वुड से कि रब को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. इट इज नॉट वो सतयुग वाली बात नहीं है कि अनकंडीशनली आप भगवान को मानते हो. हम ह्यूमन बींग्स है ना, बड़े 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 सेल्फिश से हैं. एंड वी लाइक टू फील कि हम बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े पढ़ लिख गए हैं, हमें बहुत साइंस का बहुत ज्ञान है. तो अब उस ज्ञान को कैसे मात दी जाए? अगर आप जिसको मधुमेह, शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको बोलते हो कि आओ जी आप करेले खाओ, मैं आपकी शुगर फिक्स करता हूं, तो हमें भी लगेगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे को शुगर थी और मेरे को कड़वा खिला के मेरे को ठीक कर दिया. या अगर मेरे को कोई हार्ट की एलिमेंट है तो मेरे को तो उबला हुआ लंगर खिलाया और उबला हुआ लंगर खिलाकर बगैर तेल के मुझे ठीक कर दिया. मजा तो उसमें है. Maza in the sense our jaw drops and all our logic and questions and doubts and ifs and buts go out of the window when Guruji treats us in the opposite way, the most unconventional way that we were not expecting. And that's where we say, where the science ends, his divinity begins. And this is exactly what happened in my mother's life on day one. So day two was a day where all four of us went. And now I'll talk about my first impressions, because we all know कि ये जो journey है, that's a journey of soul. So it's pretty one-to-one. It's pretty individualistic. It's pretty independent. Even if you go as a unit, you might go with your spouse, you might go with your friends, you might go with your neighbors, you might go with your family. But your connect is really ruhani, जिसे कहते हैं one-to-one.
with Guruji. So I went, and I was in my late teens back then, Sangaji. And I look at Guruji and I see this, glowing face. He was wearing a baby pink embellished chola. So very different from what I had expected. जब तुम word Guruji सुनते हो, so I automatically talk about stereotypes. They exist, and talk about unconscious biases. They exist, and they're called unconscious because we don't even know they exist. So I had this particular image, a typical image, and it was quite the opposite. And Guruji was exceedingly good looking. His aura cannot be explained in words. And I see him, and my impression is that, wow, have I come into some heavenly place, Indralok. And why I say that, because Guruji was sitting on a red chair like this. वो कुर्सी I think आज भी है Empire State में. It was the same chair. और थोड़ी सी संगत थी. संगत स्कैटर होकर बैठी हुई थी. कुछ लोग बहुत ध्यान में बैठे हुए थे. कुछ लोग अपना छोटा सा सर्कल बना के आपस में हौले हौले कुछ बातचीत भी कर रहे थे. और वो बातचीत उस टाइम मेरे को समझ नहीं आई थी, बट वो सत्संग शेयरिंग होती थी इन स्मॉलर ग्रुप्स. एंड primarily, Guruji was sitting situated in the front on his singhasan. And there was an auntie जो उनके पैर घुट रही थी, और एक आंटी ऐसे साइड पे बैठ के उनके हाथों को मसाज कर रही थी. And there was one auntie that was standing behind the chair and massaging his shoulders. So I was like, wow, this looks like इंद्रलोक के भगवान बीच में बैठे हैं और आसपास अप्सराएं सेवा कर रही हैं. सो ये इम्प्रेशन हुआ. और गुरुजी ने हमारा नाम पूछा, हमसे पूछा हम क्या कर रहे हैं. हमने बोला कॉलेज में हैं. और उन्होंने बड़े प्यार से हमें बिठा दिया. एंड आई थिंक उन्होंने कोई तो जोक बनाया था दैट एक बेटी पापा की है सगी, और एक माँ की लाडली, और समथिंग लाइक दैट. मुझे अच्छे से याद नहीं है. So we sat down, and गुरुजी ना बड़ी तिरछी नजर से देखते थे, और ऐसे उंगली से इशारा करते थे. और जब वो तिरछी नजर से देखते थे तो कभी कभी पता नहीं चलता था कि किसको देख रहे हैं. आपको देख रहे हैं, पीछे वाले को देख रहे हैं, पड़ोसी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं. सो ऐसे उन्होंने हाथ से इशारा किया, और राइट अवे फिर से प्रसाद दिया. सो वही जो एक्सपीरियंस था लास्ट नाइट का, मल्टीपल टाइम्स प्रसाद मिला. हमें तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इतनी टेस्टी टेस्टी मिठाई मिल रही थी. और उस टाइम संगत जी मुझे इस बात का इस बात की कोई गहराई समझ ही नहीं आई थी कि तीनों लोगों के नाथ हमारे बीच में बैठे हैं संगत जी, और अपने पावन हाथों से प्रसाद को मसल मसल के हमें दे रहे हैं. इस बात की क्या गहराई है, क्या मानता है, मेरे को समझ ही नहीं है. उस टाइम it was a nice looking guru who's sitting on a chair and giving us prasad. And in my mind, Guruji was nothing more than somebody who has the ability to foresee and forewarn. That's it. कि कोई इन्होंने पूजा पाठ किया है, और उसके प्रताप से he has the ability to predict things, and he has the ability to forewarn you, and that is it. I did not understand, and again by his design back then, that he is Mahashiv. He is the God who's created this entire Brahmand. आप इमेजिन करो संगत जी कि अगर सूरज भी इनको देखकर, इनको नमस्कार करके उगता है, तो क्या पावर्स होंगी इनमें. लेकिन हमारे सामने तो वो हार्ड मास में बैठे थे, एक इंसान की तरह बैठे थे, और बस उतना ही समझ आया, क्योंकि उतना ही देखा और उतना ही गुरुजी ने पर्दा हटाया. सो इट्स ऑल बाय हिज डिजाइन. सो दैट हैपेंड. एंड शब्द चल रहे थे इन द बैकग्राउंड. उसके बाद गुरुजी ने किसी को सत्संग शेयर करने को बोला, एंड उन्होंने ये सुनाया कि कैसे उनका कल्याण हुआ गुरुजी के पास आके. और मुझे ये सुन के भी बड़ा अजीब लगा
कि इतने थोड़े से लोग हैं, और अगर किसी का कल्याण हो भी गया तो इसमें अब इसको अनाउंस करने की क्या बात है? अगेन, मंद बुद्ध, हम हमारी छोटी अकल हमें इस बात की गहराई कि ये सत्संग शेयरिंग का की क्या सिग्निफिकेंस है, और आज भी जो हम रिपीटेडली करते हैं, मेरे पास कोई नए सत्संग तो सुनाने को है नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का हुक्म समझकर, गुरु जी का प्रसाद समझकर, उस सेवा को सर मत्थे पे रखकर, I do it, and I do it repeatedly, because whatever I've experienced in his time, in his physical time, those things remain the same. And I've quoted that again and again and again. And sure, you get to experience something new every single day. But those moments that we spent with Guruji during his time, it's a different category altogether. And I always try to focus on those experiences first, because anything that has happened later, right? And again, even by his grace, I feel like sometimes, it I worry कि कहीं, I hope that's not a figment of my imagination, और या गुरुजी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाऊंगी, या कुछ गलत एक्सपीरियंस तो नहीं नरेट कर जाऊंगी, लेकिन जो गुरुजी के टाइम हुआ सो हुआ, that's factual, and that's a matter of fact. So it's a lot easier to recollect those times and just share it with you all, and hence the repetition. But even with that repetition, when we talk about satsang, Guruji used to say, satsang karne wale ka bhi kalyan or satsang sunne wale ka bhi kalyan. So even if you're hearing the same thing, there could be a blessing in it for you, or someone else who's probably hearing it for the first time, or the receiver or the sharer might, even amidst the same incidents, be able to deliver a whole new message or give a whole different perspective to someone who's in need of that. So never, whenever there's an opportunity to do his ustad, Sangaji, it's my humble request with hands folded. Do not turn it down, because it's not about you, it's not about me. And it shouldn't be. We should never make satsang sharing about us. Satsang is about him. And the emphasis of putting our pictures and putting our names out there in the invites, we are taking away from the simplicity that, hey, I am coming amongst you to share my aap beeti. गुरुजी के साथ जो मैंने पल बिताए, जो मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ एक मकसद से कि आपको भी गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले, और आपका भी कल्याण हो, और आप उस कल्याण को लेकर आगे स्प्रेड करो, राइट? There's a concept called paying it forward, right? अगर हमें किसी की बख्शीश मिली है, हमारे गुरु की कृपा मिली है, और उनकी बख्शीश और उनकी मेहर, उनकी नदर हमने एक्सपीरियंस की है, तो हम सबका वो फर्ज बनता है कि हम आगे उस चीज को बढ़ाएं, वो बीज को बोए, ताकि हम जानते हैं कि एक बीज से पता नहीं कितने मिलियन फल आगे पैदा होते हैं. एंड that's the legacy that we want to keep spreading, and not because it's us, but because it's our responsibility and it's our moral duty to show everybody, even if it's just one time, the path to Guruji's द्वार. उसके बाद संगत जी वो जुड़ते हैं, वो नहीं जुड़ते, कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं, कम जुड़ते हैं, दैट्स नॉट आवर लुकआउट. बिकॉज देन उसके बाद ये भी होने लगता है, राइट? गुरुजी के दरबार में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि अरे ये तो मुझसे पहले आए या मुझसे पीछे आई, या इसको कैसे कल्याण मिल गया, मैं तो तब से जुड़ी हुई हूँ, ये अब आई, ये इतना इसको इतना कल्याण मिल गया. ये हम नहीं जानते कि हमारा गुरुजी से नाता कितने जन्मों का है. ये हमें लगता है कि इस जन्म में हम इसके थ्रू आए या इस टाइम पे आए, एंड इट्स फाइन, बट वी शुड नेवर be doing any sort of comparisons in his darbar, because Guruji himself said, and in fact it's documented in one of the books. I'm not sure, I think वो सुखमनी आंटी की बुक में है या बैम्बी आंटी, I think सुखमनी आंटी की बुक में है कि अगर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो किसी के साथ, तो तुम अपने आप को सेट बैक कर लेते हो एटलीस्ट बाय 5 years in that spiritual evolution, in that spiritual journey, in that spiritual progression. That should be the ultimate goal for all of us. So anyway, वो फर्स्ट नाइट के इम्प्रेशंस थे, और लंगर मिला,
Like I said, बानी चल रही थी, एंड पंजाबी कम ही समझ आती थी उस टाइम. आजकल तो बानी सुन सुन के काफी समझ आनी शुरू हो गई. बोलने में अभी भी हाथ तंग है, बट आई गेट द एसेंस. And langar ka format. So yeah, another thing that I do want to share is that Guruji ki darbar mein there's a lot of uniqueness. Um, and with all due respect to all the shrines and all the temples across the world, जो चीजें हमने गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के शरण में देखी और सीखी, that I'd not seen anywhere else, right? There was a different preconceived notion about a place of worship, which completely changed when we came to his feet. So the very fact that as we would come to the gates of Empire State, and I think any old Sangat can attest to it. And again, old and new, I say for the purposes of जो चोले में मिले हैं और जो उसके बाद जुड़े हुए हैं. वैसे there is no distinction between old and new, because only Guruji knows who's old and who's new, right? But I say it primarily to differentiate जो मिले हैं और जो नहीं मिले हैं in his physical form. So जो लोग भी गुरुजी से मिले हुए हैं, they can attest to the fact that आप एम्पायर स्टेट के गेट पे गाड़ी पार्क करते थे, और जब आप वहां चल के आते थे गुरुजी के पास, there used to be this aroma that इतनी खुशबू sometimes right up to the gate that would pull you right up to his दरबार. वो मैंने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया था. कैसे किस ह्यूमिलिटी से गुरुजी वुड ग्रीट एवरीबडी विद ऐसे नमस्ते करके. कई बाद में तो संगत हजारों में आनी शुरू हो गई, एंड एक एक को अपने हाथ से प्रसाद देना, अपने अक्नॉलेज करना. आई हैव नॉट सीन दैट एनीवेयर. लंगर कैसे गुरुजी बिठा के खिलाते थे. 4 लोग एक थाली शेयर करते थे, and those 4 people didn't have to be your family or your group or your friends or anything. It could be a random group of strangers who are sharing a plate with you. And again, in his darbar, there is no coincidence. It's again orchestrated according to his design. But again, a very unique concept, whereas in his darbar, I've seen a driver eat with the malik or the owner. And this is not done outside our homes. As sad it is, it is the reality. But in his darbar, this signals that in my darbar, irrespective of who you are, what your bank balance is, what your level of education is, what your economic strata is, everybody's an equal in my eyes. And that is a huge message and a huge learning towards the mankind in general. That's why when we talk about the practical aspect, our practical guru, this is how he's practical, because वो करके demonstrate करके आपको बता रहे हैं कि humility और इंसानियत क्या होती है. And finishing the langar, कण कण उसका खत्म करना. Otherwise आप वैष्णो माँ के जाओ, कहीं जाओ, जितना आपने प्लेट में राजमा चावल खा ली डाले, पैसे देकर आप वो लंगर खा रहे हो. जितना खाया खाया, जितना नहीं खाया वो डस्टबिन में फेंक दो. Not done here. And the most beautiful thing about Guruji's darbar is that we would see that एक एक जने को लंगर खिलाने के बाद, even the driver standing outside the gate, उनको भी जब लंगर चला जाता था, उसके बाद गुरु साहिब would go into his room and have his लंगर. आप इमेजिन करो how deep that is. हमें क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले अगर आप भोग करो या पूजा पाठ या हवन करो, तो सबसे पहले आप पंडित को खिलाओ. And यहाँ पर भगवान आपके बीच में बैठे हैं, and he used to be the last one to go to his room to eat his langar after all of us are done. Who does that? Who loves us, as unconditionally as Guruji? Not even our family members, let me tell you that, because there is an element of selfishness in each one of us, and all of us, we think of this from time to time, some more than the others. What's in it for me? Why should I waste my time? What am I getting? But imagine if Guruji had that mindset too. What was he getting? He sat amongst us and gave every ounce of himself, and sometimes took upon our ailments. And then
cured us of that, took it upon himself, और वो पूजा पाठ तप करके उसको आपके आपकी डिजीजेस को, चाहे वो कैंसर है, चाहे आपको ब्लैक मैजिक की कोई कंडीशन है, या आपको हेडेक है, माइग्रेन है, अपने ऊपर वो लेकर उसको उसको तप से जलाकर नेक्स्ट डे वो फिर अपनी संगत में बैठते थे कि मैं फिर बैठूं, आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, आई टेक लोगों के कष्ट ऑन मी, लाइक नीलकंठ, लाइक महाशिव, लोगों का विष, लोगों का जहर तब भी पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं, और हम गुरुजी को बदले में क्या देते हैं? सो हैविंग दैट थॉट, having that realization that our guru is निर्वैर, निस्वार्थ, और अनकंडीशनली वो अपना प्यार, अपना प्रताप, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि हम अपने गुरुजी को क्या क्या समर्पण करते हैं, हम दे क्या सकते हैं? संगत जी, हमारे पास लंबा चौड़ा कुछ है नहीं देने को, सिवाय अपनी श्रद्धा के, सिवाय अपने भाव के। तो वो तो निस्वार्थ होकर हम दें इनके चरणों में। उसमें भी हम अपना एजेंडा, अपना इफ एंड अपना बट, और अपना लॉजिक, और अपना माइंड, और अपनी चतुराइयां लगाते रहते हैं। और संगत जी, इस दरबार में चतुराइयों का कोई काम है ही नहीं। और अपने आप को मिटाकर, अपने आप को बिल्कुल लेवल करके आप गुरुजी के पास आओ, एंड देन सी हाउ ही लिफ्ट्स यू अप, and you will realize for yourself that, oh my God, looking back in hindsight, I don't even know how I survived the situation, and I survived it because somebody had my back, and that somebody is Guruji. So, and a lot of things have personally happened in my own life where in hindsight I've thought to myself, because we all introspect and we all retrospect, and sometimes in the heat of the moment, जैसे कहते हैं ना कि जब through the trees, फॉरेस्ट में रास्ता देखना बड़ा मुश्किल होता है when you're in the jungle, but once you're out of it and you look back, there is a different sense of enlightenment, because now you're out through, you've been through that storm, and you're able to retrospect and introspect with a more calm mind. And that's when this realization comes to you even more, that, oh my God, who was holding my hand through this journey? So a lot of those satsangs, and I'm sorry, I'm scatterbrained, and I'm jumping all over the place, and I'm not sharing it in any sequence. It's because as he's guiding me and as those thoughts are coming to me, I'm just sharing. So please bear with me. And Guruji, आपसे भी माफी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या इनअप्रोप्रिएट बोल रही हूँ, तो प्लीज मेरे मुखमंडल पे विराजमान आपको ये और वो ही कहलवाना जो आपको भाता हो. So with that, I'll go back to the Empire State days, and I'll talk about how I started to build my faith. Like hota hai na, that's a journey where your faith starts to get cemented day by day, and it is based on not what the others are telling you or not what you're seeing, but it's based on what you start to feel, and those feelings come with His grace and His blessings. So that my mom experience happened, and her sugar stabilized. Great, that was great, but that was not an aha moment for me per se, because as a student and as somebody in their late teens, wrong or right, I took health for granted. And I was like, okay, great, her sugar is normal, but that's not something that's truly, that wasn't a wow factor for me per se. Now, like a good guru, like a good teacher, he came down to my level to give me a taste of what wow could have been for me. Now, as a student, the most important factor for me back then was my academics and getting through my exams. So that was the most important or the highest priority, jisko bolte hain. For me, the highest priority wasn't my health, because health to sabke paas hoti hai. That was my mindset. And again, we tend to take things for granted, but we forget that the very fact that we are able-bodied and we have clothes and we have a roof over our head,
we are better than millions around us. And this in itself, that things are normal, things are okay, things are status quo, is a blessing, Sangaji. And it's time for us to realize. Otherwise, sometimes when we talk to people and we tell them कि अच्छा आप गुरुजी के पास इतने टाइम से आ रहे हो, आप आप क्यों नहीं अपना शुक्राना करते, आप क्यों नहीं कुछ शेयर करते, एंड यू विल गेट टू हियर मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं जी, सब सब ठीक ठाक ही चल रहा है. अरे, टेक अ मोमेंट. अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो isn't that worth your शुक्राना? Like, why do we have to wait कि कैंसर होए और वो गुरुजी ठीक करें उसके बाद हम शुक्राना करें? द वेरी फैक्ट आपको नहीं हुआ है, द वेरी फैक्ट आप ठीक ठाक हो, आप ओके हो, आप नॉर्मल हो, doesn't that warrant शुक्राना in itself? It does, right? So that's why the concept of हर पल 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 शुक्राना. नॉर्मल हो तब भी शुक्राना. अगर आपके हिसाब से आप नॉर्मल नहीं हो और कोई उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आया है तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उस उतार चढ़ाव से पार कराने वाले यही तो हैं, यही तो हिम्मत देंगे. सो मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और मैं गुरुजी के पास उस रात आई, अगले दिन मेरा पेपर था कि एंड बाय एंड लार्ज रोज ही आने का मन करता था. तो रोज शाम के 7 बजे वी वुड फाइंड आवरसेल्व्स सिटिंग विद गुरुजी. एंड बैक इन द डेज संगत डेज नहीं शुरू हुए थे, गुरुजी 7 दिन दर्शन देते थे. सो आई केम और मेरे मन में ये था कि आज ना मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेकर जाऊंगी फॉर द इकोनॉमिक्स एग्जाम, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था. तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा ब्लेसिंग्स की लगनी थी. दैट वाज माय माइंड कि गुरुजी ने अगर कह दिया कि कल्याण करता तो इसका मतलब मेरा एग्जाम ठीक हो जाएगा. तो मैं हिम्मत करके छुट्टी लेते टाइम जब गुरुजी ने इशारा किया चलो हम चलो, तो मैंने मत्था टेका एंड आई सेड गुरुजी मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. मैंने बस इतना ही बोला. ही डिडंट आस्क व्हाट ग्रेड, Delhi University or school or college, nothing. And he just started asking me questions pertaining to the topic. और जो भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे, इलास्टिसिटी के, डिमांड एंड सप्लाई के, उसके ऊपर गुरुजी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए. अब पहले तो मेरा दिमाग हिल गया इसी चीज में कि भाई ये गुरुजी को कैसे पता इन टॉपिक्स के बारे में. Dusra, the pace at which the questions were coming, I could feel those questions, because the second I would, I would start to tackle the first one, the second one would come. And then by the time my mind would switch gears to the second one, he was asking the third one already. And I looked very confused that why is he asking me questions if he's really not interested in my responses? And then an auntie, she looked at me and she's like, beta, note karo, aapko paper bata rahe. And it's like a light bulb that lit up. And then, I switched gears and I started to memorize the questions. So my focus was no more on responding to those questions, but it was on memorizing those questions so that I could go home and then restudy those concepts. And I did that. And next day when I appeared for the examination, Delhi University economics, those questions were on the examination paper. And that was the moment for me personally, where everything aside, I started to feel that, oh my God, this place is a game changer. So, there were satsangs not just about recovering from complicated diseases, but this guru actually understands economics and he is able to foresee my question paper. And that moment of ecstasy, what I felt, Sangaji, I cannot share that. I have no words to put that into. And so that happened. And then several other, small incidents started to happen with me personally. And this is aside of what my sister, what my mother, what my father, because if I get into their experiences, like sabki life mein kuch na kuch simultaneously ho raha tha, where Guruji was pulling us all as a family towards himself and really showing us in different ways and just getting in different dosages who he was. And my sister has her own satsang about how Guruji got her married, or kaise,
अनीता वर्मा आंटी को विचोला बनाकर गुरुजी ने वो रिश्ता बताया, and the things that happened, and then how he scolded by my mother for not for getting a pandit involved, and he took my sister's engagement ring, and all that is separate. And my father was having his own experiences where unke उनके हार्ट में 98% blockage निकली, and how Guruji cured him of that. So all that is aside, and then he was my dad's satsang primarily is even documented in Light of Divinity. So I'm not going to get into that, or at least intentionally get into that. Unintentionally, if I wander into that, then Guruji knows. But like so much was happening. एंड उस टाइम संगत जी हम बैठ कर ना ऐसे नोट्स एक्सचेंज नहीं करते थे, हम ऐसे सत्संग शेयर नहीं करते थे. इट वाज जस्ट हैपनिंग एंड वी वर गोइंग विद द फ्लो. और जैसे आज वी ऑल हैव बिकम गुरुजी ऑब्सेस्ड कि हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हम गुरुजी की बात कर रहे होते हैं, राइट? उस टाइम ऐसा नहीं था, और आई थिंक ऐसा नहीं था बिकॉज बैक ऑफ द माइंड हमें ये रीअश्योरेंस थी कि गुरुजी यही है और हमने रोज तो जाना है. सो वी गेट टू सी हिम एवरी डे, एंड वी गेट टू टच हिम एवरी डे, एंड वी गेट टू हियर हिम every day, and so he's there. We did not realize that one fine day वो ऐसे हम सबकी आंखों से ओझल हो जाएंगे. और वो गुरुजी ये कहते थे, रिपीटेडली कहते थे कि मैं तो बहती हुई गंगा हूँ, कल्याण करा लो, मैं तो चले जाना है, मैं तो चले जाना है. और हम दिल्ली वालों को लगता था कि गुरुजी कह रहे हैं कि वो पंजाब चले जाएंगे, बिकॉज ही वुड से कि दिल्ली वालों को महापुरुषों की समझ ही नहीं है. और हमें ये बातें जैसे एक कान से सुननी दूसरी से निकाल देनी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि ये बोल क्या रहे हैं, एंड वेयर इज ही गोइंग टू गो एंड व्हेन इज ही गोइंग टू गो. सो इट वाज वेरी क्रिप्टिक. So the other incidents that started, fueling more belief in me was when I was diagnosed with polycystic ovarian disease. And I was very upset because the name sounded very complicated. And by that time, I was, I think, 20 or 21. So again, fairly young. Unmarried, and the thought of putting birth control and hormones in my body was very unsettling. And I was like, पता नहीं इसके क्या side effects होंगे. So I was very reluctant, but क्योंकि multiple cysts थे in my ovaries, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये हॉर्मोन्स, ये बर्थ कंट्रोल आपको शुरू करना है. सो बड़ी मायूस होके गुरुजी के पास आके मैं बैठी, और हमारे पास जो हमारा मेन रामबाण जिसे कहते हैं, हुक्म का इक्का, because there's no, it's a very petty way of describing, but I'm speaking from a mind of 20-year-old. So गुरुजी को फिर इतना ही बोला कि गुरुजी मेरे को ना पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हल्दी वाला दूध पी रोज. That's all that he said. And I went back home. एक तो मैं दूध की बचपन में कभी दूध नहीं पिया, तो अब क्या दूध पीना है. I जैसे कहते हैं मिल्क से मेरे को रिपल्शन थी, और ऊपर से हल्दी. I said beautiful, lethal combination. But गुरुजी का हुक्म, तो मैंने 1 2 3 दिन तो जो कहते हैं नाक बंद करके थोड़ा सा वो पिया. And after that, I did not keep up with it. But मेरा follow up ultrasound आ गया. And believe you me when I tell you, Sangatji, those cysts in my ovaries had dissolved. And again, a moment of wonder where, science is down on its knees, and the doctors are feeling victorious because they feel like, okay, आपने ये medicine खाई, आपने ये course किया, और आपके cysts dissolve हो गए. और उनको ये बात नहीं पता कि मैंने तो medicine को छुआ भी नहीं, वो medicine को मैंने खोला भी नहीं. All I did was followed my Guruji's commandment. वो भी Guruji माफ करना, not to its T. I did it minimally, and how he cured me. That was another moment which was like, next level. Wow, how did this happen? Because it's, again, I keep saying this. It's one thing to hear कि oh XYZ की ये disease ठीक हो गई, या XYZ का ये problem ठीक हो गया, and it's another thing when you experience it yourself. So and then my chocolates and juttis wala satsang is
my most favorite satsang, getting the blessing of sitting with him in a car, on a back seat, and just going from one place to the other. Like those are the moments where, when you look back in immense amazement that, oh my God, I was such a rookie. I was so ignorant that I did not even understand that मैं किसके रूबरू हूँ, मैं किसके आमने सामने, मैं किसके साथ बैठी हूँ, मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, मैं किसको छू रही हूँ. Guruji would sometimes extend his hand very lovingly and speak to us in English. And then, sometimes he would say कि हाथ दबा, पैर दबा. And संगत जी, वो जब उनके हाथ और पाँव एकदम रुई की तरह, कॉटन की तरह मुलायम, और हम जब उनको घुटते थे, हमारे हाथ इतने खुशबू से भर जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब घर जाके तो इसको धो ही ना. And those experiences were so pleasant and priceless. And I still don't know that किस कर्म योग से, amongst billions of people, amongst billions of souls, Guruji handpicked us and gave us a taste of his elixir. And he is doing that even today. And he is doing that, and the very fact that billions of people across the globe have connected with Guruji is a testament to his grace. And that grace continues to multiply manyfold. And I don't know if I'm the only one who feels that way. But when Guruji when people talk about Guruji, wo itni, sense of pride, that immense pride flows through, every cell, every DNA in me. कि जैसे, एक माँ नहीं खुश होती when somebody talks about their child. हमें भी ऐसा लगता है कि he's our Guruji, and look, now everybody has become his follower. And our hearts are filled with, immense love, hope, joy. So this is, and again, I know Saki told me that, do it in parts. So, I'm going to take a break now because I don't want to go on for like 2 hours straight. अगले, whenever Guruji का हुक्म आता है और अगली sharing का मौका मिलता है, so I will go into a little bit more about experiences during Guruji's time, and then his Mahasamadhi and life after Mahasamadhi till date, so as he guides. But thank you is a very small word, Guruji, but that's all we can offer at your lotus feet. हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम बोलें कि गुरुजी हम आपके पास रहे. मैं ये कहना चाहूंगी, सारी संगत के बिहाफ से कहना चाहूंगी कि गुरुजी आप हमें अपने चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि हम मूर्ख हैं और हम वीक हैं और हम इधर उधर डोल जाते हैं. लेकिन अगर आप हमें थाम के रखोगे ना गुरुजी, तो हम आपके चरणों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे. और मैं यही बख्शीश आपसे चाहूंगी, आपका तरस चाहूंगी, आपकी कृपा चाहूंगी कि आपके चरणों से हम सब की प्रीति बनी रहे. तो अनंतम शुक्राना. कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुजी. And thank you Sangat ji for listening. Jai Guruji, Shukrana Guruji.